morning, gentlemen. Now, for next 10 minutes, if you listen to this video carefully and with attention, you will get a new perspective. खासकर वो लोग जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप्स लॉन्च करने हैं, इवन दुकान खोलनी हो और यहाँ तक कि इवन बुक लिखनी है, क्योंकि बुक को बेचना तो पड़ेगा ही, घर पे रख नहीं सकते, या जिनके ऑलरेडी बिजनेसेस हैं लेकिन दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर नॉट ग्रोइंग एंड दे आर लॉस्ट कि करना क्या. सो दिस बुक, द टिपिंग पॉइंट, is a very interesting book which will give us a new direction, a new perspective कि हमें अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं. So let's dive straight into this book, the tipping point, the how little things can make a big difference. You see, big business stories rarely start big. वो छोटे से ही शुरू करती हैं, बाद में सक्सेस बनती है. फॉर इंस्टेंस, आउट ऑफ नोवेयर एक शू ब्रांड है हश पपीज, जो आज बाटा के पास लाइसेंस है उसको मैन्युफैक्चर करने का इंडिया में. वो बंद होने की कगार पे था और उसके कोई सेल्स हो नहीं रही थी. लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि विद इन मंथ्स वो शूज जो थे वो पूरे अमेरिका में हर मॉल में अवेलेबल थे, सेलिब्रिटीज तक पहन रहे थे. What happened? How did something so small and so random explode into a nationwide craze? और उन्होंने कुछ किया नहीं उसके लिए, वो हो गया. इसी तरह एक बच्चों का टीवी प्रोग्राम जिसमें वो बताते थे कि बच्चों को कैसे अल्फाबेट सिखाया जाए. थोड़ी से चेंजेस हुए एंड इट बिकेम ए सक्सेस. सो ये सब कोई रिवॉल्यूशनरी साउंड नहीं करता है. Each of these movements triggered a wave so massive that it reshaped industries, cultures, and even human behavior. How? ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन? ये मिस्ट्री इस बुक में मैल्कम ग्लैडवेल ने दी है in his brilliant book, The Tipping Point. How little things make a big difference. और उसको ये हिडन मूवमेंट को कहता है अ टिपिंग पॉइंट. जब कोई आइडिया, एक ट्रेंड और या प्रोडक्ट सडनली क्रॉसेस अ थ्रेशोल्ड, तो इट बिकम्स अनस्टॉपेबल, जिसको हम आज कहते हैं ना, वायरल हो गया वीडियो. सो वही चीज है यहां पर. हियर इज द बेस्ट पार्ट कि ये जो मूवमेंट है ये कोई मैजिक नहीं है. इट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न. इट इज, वन कैन कॉल इट इवन साइंस. और उसके पीछे हैं 3 इनविजिबल लॉज जो डिटरमाइन करते हैं कि वेदर योर आइडिया कैन कैच फायर और इट में डाई आउट. तो आपका वीडियो, आपकी बुक, आपका प्रोडक्ट वायरल होगा या डाई आउट, वो इन 3 इनविजिबल लॉज पे डिटरमिन करता है. और इनको ऑथर कहता है, इन लॉज को, फर्स्ट द लॉ ऑफ द फ्यू, द सेकंड द स्टिकीनेस फैक्टर एंड द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट. और अगर आप ये 3 चीजें, ये 3 लॉ समझ लेते हैं, यू विल नो हाउ टू टर्न अ स्मॉल आइडिया इनटू अ मूवमेंट, a message into a brand, or a story into a bestseller. So let's decode these 3 laws and discover how little things make difference. So let's take the first one, the law of the few. हर revolution या हर भी कोई भी चीज वायरल होती है, it begins with a handful of people who push the first domino. ये masses नहीं होते who move the mountains. It's only the few who make millions move. और ग्लैडवेल उनको बुलाते हैं, वो कहते हैं कनेक्टर्स, मेवन्स एंड सेल्समैन. तो 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, कनेक्टर्स, मेवन्स एंड सेल्समैन. कनेक्टर्स वो होते हैं who know everyone. They are the bridges between worlds. और ग्लैडवेल इंट्रोड्यूस करते हैं 2 बंदों से, पॉल रिवर एंड डेव्स. पॉल रिवर एक अमेरिकन पेट्रियट था
जो अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट के समय, इंडिपेंडेंस के समय, वो फेमस हुआ अपनी मिडनाइट राइड के कारण। जब उसे पता चला शाम को, बल्कि अंधेरा होने पे, कि ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, तो वो रात को निकल पड़ा उस दिशा में जहां पे कि ब्रिटिशर्स को जाना था। और वो बताता गया। अब वो कितने लोगों को बताता, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो सब लोग तैयार थे उनसे लड़ने के लिए। लेकिन दूसरी दिशा में विलियम डेव्स गया उसी रात को, with the same message that the British are coming. लेकिन पॉल का मैसेज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वेयर डेव्स वार्निंग fizzled. क्यों? Because Paul Revere was a connector. He had a huge social web stretched across towns and trades. He knew the right people in every community, the influencers, the local leaders, so he could rally people around. So जब उसने अलार्म साउंड किया, the message did not just travel, it ignited. That's the power of the connector. So they don't just communicate, they amplify. So look for connectors who know people. The second, he says, is the requirement of Maven. Mavens collect knowledge and share it generously. वो ट्रस्टेड वॉइसेस होते हैं, वी ऑल टर्न टू। वो शो ऑफ नहीं करते अपनी नॉलेज, दे शेयर their knowledge because they love to help. So Gladwell tells the story of a man named Mark Elpert, a journalist and a consumer expert who seemed to know everything about production prices. So Mark could tell you which camera model offered the best value or which store had the best sale. Not because he worked there, but because he had useful information and he loved to spread it. And people trusted him, क्योंकि वो अपने लिए कुछ बिजनेस नहीं कर रहा। तो जब मेवन बात करते हैं तो सुनना चाहिए, but because they are reliable. So they create trust-based word of mouth, the spark that keeps an idea alive and credible. Third is a salesman. Salesmen are born persuaders. They can make the hesitant believe, the doubtful act. लेकिन information alone is not enough. Sometimes people just needed to be convinced, to be persuaded. और वहीं पे salesmen come into the play. They are charismatic persuaders who can make others believe, feel and act. And here he gives another story of a person, Tom, who had this extraordinary ability to sell ideas, not through pressure, but through energy and emotion. It's worth reading this story. So, the connector spreads the word, the maven ensures that the word is trusted, and the salesman makes sure people act on it. And together they form the human engine behind every tipping point. There are always a few rare people who make the world's ideas move. And this is what happened with the hush puppies. Some people noticed, and then the celebrities followed. Within months, a brand on life support became a cultural sensation. So, the law of the few means the right people make the smallest idea go viral. So, look for connector, the maven, and the salesman. The next principle is the stickiness factor. We meet so many people, we listen to so many ideas, and these people spread the ideas. लेकिन एक क्वेश्चन आता, why do some ideas stick while others fade away? Gladwell calls it the stickiness factor. It's not about shouting louder. It's about being memorable. क्या दिमाग में रह जाता है? It's about creating messages that people can't stop thinking about. अब हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पीयूष पांडे के एड्स हैं फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं।
या दम लगा के हईशा, हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट्स को. These one-liners stuck. And Piyush Pandey says, if you can't touch the heart, you cannot sell. चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन हो, चाहे कैंपेन हो, चाहे यूट्यूब का वीडियो हो, if it sticks, it spreads. Are you touching the heart of your customer? And if you are not touching, then you cannot sell. If your story is not touching the heart, you cannot sell the story. That's stickiness. Then we come to the last principle, that is power of context. Because it shows us that the human behavior is not about people or ideas, it's about situation also. This is what he calls as the power of context. He argues, the author, that even the smallest changes जो हमारे surroundings में होते हैं can dramatically alter how we behave. He says, he gives an example of New York City in 1980s, जहाँ पर crime was out of control, murders, robberies, graffitis. ऐसा लग रहा था जैसे city was falling apart. And then came two men, David and William. Or instead of going after major crime, they decided to focus on the small stuff, enforced basic order. So they did small things. And within a few years, major crime rates dropped sharply. The lesson, when people see order around them, they behave better. Another very important example he gave is of law of broken windows. इसे कि अगर आप सड़क से जाते हैं और आप एक घर में नोटिस करते हैं कि उसकी खिड़की टूटी हुई है, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने भर कोई रिपेयर नहीं कर रहा, वो टूटी हुई, क्या होगा? वो सिचुएशन कैसी होगी कि कोई केयर नहीं कर रहा. और फिर क्या होगा? शायद एक और खिड़की टूटेगी, कुछ लोग अंदर भी घुसेंगे टू एक्सप्लोर के यार लगता है कोई है ही नहीं, लेट्स गो इनसाइड. ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है. क्यों सिचुएशन क्रिएट हो रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई केयर नहीं कर रहा है. दिस इज द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट. दिस इज द सिचुएशन. द सेम थिंग हैपेंस. द बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय द सिचुएशन, द कॉन्टेक्स्ट. सो नाउ let's put all together. The connectors spread ideas. The mavens make them trustworthy. Salesmen make them irresistible. वो persuade करते हैं. Stickiness factor ensures that the heart is touched and the message is unforgettable. The power of context gives it the perfect moment and place to explode. That's how ideas tip. Not because के बहुत giant budgets हैं और कोई luck है इसके पीछे. ये 3-4 चीजें हैं. So you got to look into small details and align them perfectly. So if you are building a business, launching a startup, or writing a first book, remember this: you don't need to start big. You just need to find your few, make your message stick, and choose your movement wisely. Because once it tips, there is no stopping it. It becomes viral. Thank you. Jai Hind.